नमस्कार, गुड आफ्टरनून सभी दोस्तों को। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग आवर बुक जो कि हमने लास्ट टाइम छोड़ी थी और वी प्रॉमिस कि वी विल बी गेट बैक। ये हमारी बुक है द पावर ऑफ नाउ। बहुत ही इंस्पिरेशनल बुक है ये, द गाइड टू स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट। जो इनर और आउटर पीस है उसके बारे में मोस्ट एक्सप्लेन किया है जो इसके राइटर हैं, और काफ़ी अच्छी बुक है भाई ये। मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं इससे, और माइंड को कैसे एक स्टेट में आप प्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें कैसे वर्क कर सकते हैं, पूरी इस किताब में एक्सप्लेन हुआ है राइटर ने। सो नॉट टू डिले फर्दर, और लेट्स रीड दिस बुक अगेन। द स्टेट ऑफ प्रेजेंट, जो प्रेजेंट की स्टेट है वो क्या है, मतलब इसमें क्या क्या एक्सप्लेन किया है राइटर ने, वो पढ़ते हैं हम इस बुक में, है ना। तो बने रहो, कहीं जाओ मत, और लेट्स बिगिन। Falling back to a level of consciousness below mind, which is the pre-thinking level of our distant ancestor of animal and plants. It is not an option for us. There is no way back. If human race is to survive, it will have to go back to the next stage. Consciousness is evolving throughout the universe in billions of forms. So even if we didn't make it, this wouldn't matter on a cosmic scale. No gain in consciousness is ever lost. So it would simply express itself through some other form. But the very fact that I am speaking here and you are listening or reading this is a clear sign that the new consciousness is gaining a foothold on the planet. ये planet के बारे में उन्होंने बताया कि अगर आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, तो ऑलरेडी फुटप्रिंट इसमें आ चुके हैं। There is nothing personal in this. I am not teaching you. You are consciousness, and you are listening to yourself. There is an Eastern saying: the teacher and the taught together create the teaching. In any case, the world in themselves are not important. They are not the truth. They only point to it. I speak from present, and as I speak, you may be able to join me in that state. Although every word that I use has a history, of course, and comes from the past, as all language does. The word that I speak to you now are carriers of the high energy frequency of present. सो हेलो, वेलकम। जो भी एक फर्स्ट व्यूअर हमारा आ चुका है, सो वेलकम टू द रीडिंग क्लब। क्वाइट अपार्ट फ्रॉम द मीनिंग दे कॉन्वे एज वर्ड। ओके, सो हेलो दोस्तों, 3 दोस्त हमारे जुड़ चुके हैं और हम किताब पढ़ रहे हैं द पावर ऑफ नाउ बाय एडगर टोली की। बहुत ही मस्त किताब है और प्रेजेंट में कैसे जीना वो सिखाती है। साइलेंस इज़ एन एवरी मोर पोटेंट कैरियर ऑफ प्रेजेंट. So when you read this or listen to me speak, be aware of the silence between and underneath the word. Be aware of the gap to listen to the silence. Wherever you are in is an easy and direct way of becoming present. Even if there is noise, there is always some silence underneath and in between the sounds. Listen to the silence immediately creates stillness inside you. Only the stillness in you can perceive the silence outside. And what is stillness other than presence, consciousness, freed from thought form? Here is the living realization of what we have been talking about. So guys, please comment अगर आपको कुछ पूछना है तो throughout this book we can discuss. So next chapter इस book का start हो चुका है, Christ, the reality of your divine presence. The reality of your divine presence. Don't get attached to any one word. Oh my God. You can substitute Christ for presence if
that is more meaningful to you. Christ is your God, essence of the self. As it is sometimes called in the East, the only difference between Christ and the present is the Christ. Christ refers to your unwilling divinity, regardless of whether you are conscious of it or not. Whereas presence meaning your awakened divinity or God essence. Many misunderstanding and false belief about Christ will clear if you realize that there is no past or future in Christ. To say that Christ was or will be is a contradiction in terms. Jesus was. He was a man who lived 2000 years ago and realized divine presence, his true nature, and so he said, "Before Abraham was, I am." He added, he did not say, "I already exist before Abraham was born." That would have meant that he was still within the dimension of time and form identity. The word "I am" used in a sentence that starts in the past tense indicate a radical shift, a discontinuity in the temporal dimension. It is a Zen-like statement of great profundity. Jesus attempted to convey directly, not through discursive thought, the meaning of presence of self-realization. He had gone beyond the consciousness dimension governed by time into the realm of the timeless. The dimension of eternity had come into this world. Eternity, of course, does not mean endless time, but no time. Thus, the man Jesus became Christ, a vehicle from pure consciousness. And what is God's self definition in the Bible? Did God say, "I have always been and I always will be"? Of course not. That would have given reality to past and future. God said, "I am that. I am no time here, just present." The second coming of Christ is a transformation of human consciousness, a shift from time to present, from thinking to pure consciousness. Not the arrival of some man or woman. If Christ were to return tomorrow in some externalization form, that would he or she possibly say to you other than this: "I am the truth, I am divine presence, I am eternal life, I am within you, I am here, I am now"? Never personalize Christ. Don't make Christ into a form, identity, avatar, divine mother, enlightenment master. The very few that are real, are not special as person without a false self to afford, defend, and feed. They are more simple, more ordinary than the original man or woman. Anyone with a strong ego would regard them as insignificant or more likely not see them at all, right? If you are drawn to an enlightenment teacher, it is because there is already enough presence in you and recognized presence in another. There are many people who did not recognize Jesus or the Buddha, as there are and always have been many people who are drawn to false teachers, egos, and drawn to bigger egos. Darkness cannot recognize light. Only light can recognize light. So don't believe that the light is outside you or that it can only come through one particular form. If only your master is an incarnation of God, then who are you? Any kind of exclusivity is in identification with form. And identification with form means ego, no matter how well disguised.
Use the master present to reflect your own identity beyond name and form back to you, and to become more intensely present yourself. You will soon realize that there is no mine or yours in presence. Presence is one. Group work can also be helpful for intensifying the light of your presence. A group of people coming together in a state of presence generates a collective energy filled of great intensity. It not only raises the degree of presence of each member of the group but also helps to free the collective human consciousness from its current state of mind dominance. This will make the state of presence increasingly more accessible to individual. However, unless at least one member of the group is already firmly established in it and thus can hold the energy frequently of that state, the egoic mind can easily reassess itself and sabotage the group endures. Although group work is individual invaluable, it is not enough, and you must not come to depend on it, nor must you come to depend on a teacher or a master. Expect during the transitional period when you are learning the meaning of practice of presence. So we have finished 3 pages right now, and the नेक्स्ट चैप्टर द स्टेट ऑफ प्रेजेंस हमने ख़त्म कर चुके हैं, और नेक्स्ट चैप्टर 6 जो है हमारा द इनर बॉडी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये द इनर बॉडी, तो क्या कहता है राइटर इनर बॉडी के बारे में, लेट्स रीड थ्रू। सो नो व्यूअर्स सो फार वी हैव, currently we have 2 viewers. Being is your deepest self. You spoke earlier about the importance of having been rooted within or inhabiting the body. Can you explain what you mean by that? The body can become a point of access into the realm of being. Let's go into the more deeply now. I am still not quite sure if I fully understand what you mean by being. I'm still quite not sure if I fully understand what you mean by being. What do you mean by that? I don't understand it. This is what a fish would say if it had a human mind. Please stop trying to understand being. You have already had significant glimpse of being, but the mind will always try to squeeze it into a little box and then put a label on it. It cannot be done. It cannot become an object of knowledge. It being subject or object merge into one. Being can be felt as the ever present I am that is beyond name and form, to feel and thus to know that you are, and to abide in that deeply rooted state is enlightenment. Is the truth that Jesus say will make you free? Free from what? क्रिश्चियनिटी धर्म का प्रचार हो रहा है किताब में, लेकिन लेट्स गो थ्रू। Free from illusion that you are nothing more than your physical body and your mind. This is illusion of self, as the Buddha call it, is the core error. Free from fear in its countless discusses as the inevitable consequences of that illusion. The fear that you
The fear that is your constant tormentor as long as you derive your sense of self only from this ephemeral and vulnerable form, and free from sin, which is the suffering you unconsciously inflict on yourself and other, as long as this illusion sense of self govern what you think, say and do. Welcome the viewer. Who are you? I love you much. So guys, आप कमेंट कर सकते हैं फ्रॉम वेयर यू आर वाचिंग, आपका नाम, पता, जिला, कंट्री एंड जहाँ से भी आप देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट सो वी विल नो हु यू आर. Chat filter, no filter yet. Pin to live stream, check product. What do you mean by tech product? I don't have any tech product, sorry. And yes, copy link create, no. So 4 लोग आ चुके अभी. मैंने पढ़ना बंद किया तो लोग बढ़ रहे हैं, जब मैं पढ़ रहा हूँ तो लोग घट रहे हैं. आई डोंट नो. सो चलो नेक्स्ट हेडिंग जो इसकी है वो है लुक बियॉन्ड द वर्ड. जो शब्द हैं उनके बियॉन्ड देखो. आई डोंट लाइक द वर्ड सिन. इट simplies that I am being judged and found guilty. Wow. I can understand that over the centuries many erroneous view and interpretation have accumulated around words such as sin due to ignorance, misunderstanding, or a desire to control, but they contain an essential core of truth. If you are unable to look beyond such interpretation and so cannot recognize the reality of which the word point, then don't use it. Don't get stuck on the level of a word. A word is no more than a meaning to an end. It's an obstruction, not unlike a signpost. It point beyond itself. The word honey isn't honey. You can study and talk about it for as long as you like, but you don't really know it until you taste it. After you have tasted, the word become less important to you. You won't be attached to it anymore. Similarly, you can talk about and think about God continuously for the rest of your life. But does that mean you know, or have you ever glimpsed the reality to which the word point? It really is no more than an obsessed attachment to a signpost, a mental ideal. The reverse also applies. If for whatever reason you dislike the word honey, that might prevent you from ever taste it. If you had a strong aversion to the word God, which is a negative form of attachment, you may be dyingly dying not just the word but also the reality to which it points. You would be cutting yourself off from the possibility of experience that reality. All this is of course intrinsically connected with being identified with your mind. So if a word doesn't work for you anymore, then drop it and replace it with one that does work. If you don't like the word sin, then call it unconsciousness or insanity. That may be that may get you closer to the truth and reality behind the word. That a long misuse word like sin and leave little room for guilt. I don't like those words either. They imply that there is something wrong with me. I am being
judged. Of course, there is something wrong with you, and you are not being judged. I don't mean to offer you personally, but do you not belong to the human race that has killed over 100 million members of their own species in the 12th century alone? Good. You mean guilt by assassination? It is not a question of guilt, but as long as you are run by the egoic mind, you are part of the collective insanity. Perhaps you haven't looked very deeply into the human condition in its state of dominance by the egoic mind. Open your eye and see the fear, the despair, the greed, and the violence that are all pervasive. See the heinous cruelty and the suffering on an unimaginable scale that humans have inflicted and continue to inflict on each other as well as on others life form on the planet. You don't need to condemn, just observe. Then that is sin, that is insanity, that is unconsciousness. Above all, don't forget to observe your own mind. Seek out the root of the insanity there, finding your invisible and indestructible reality. You said that identification with our physical form is a part of the illusion. So, how can the body, the physical form, being you to a realization of being? Good question. The body that can be see and touch cannot take you into being, but the visible and tangible body is only an outer shell, or rather a limited and distorted perception of a deeper reality. In your natural state of connectedness with being, this deeper reality can be felt every moment as the visible inner body and animating presence within you. So, and have intent the bodies is to feel the body from within, to feel the life inside the body, and thereby come to know that you are beyond the outer form. But that is only the beginning of an inward journey that will take you ever more deeply into a realm of great stillness and peace, yet also of great power and vibrant life. At first, you may only get fleeting glimpses of it, but through that them you will begin to realize that you are not just a meaningless fragment in an alien universe, briefly suspended between birth and death. Allow a few short lives pressures followed by pain and ultimate inhet- inhibition. Underneath your outer form, you are connected with something so vast, so immeasurably and scared that it cannot be convinced or spoken of. Yet I am speaking of it now. I am speaking of it not to give you something to believe in, but to show you how you can know it for yourself. From you are cut off from being as long as your mind take up all your attention. When this happen, and it happen constantly for most people, you are not in your body. The mind observe all your consciousness and transform it into mind stuff. You cannot stop thinking. Compulsive thinking has become a collective disease. Your whole sense of who you are in this driven from mind activity, your identity as it is a no longer rooted of being, become a vulnerable and ever needly mental construct.
which create fear as the predominant underlying emotion. The only thing that truly matters is then missing from your life awareness of your deeper self, your invisible and indesirable reality. To become conscious of being, you need to reclaim consciousness from the mind. There is no there is no of the most essential tasks on your spiritual journey. To become consciousness of being, you need to reclaim consciousness from the mind. There is one of most essential tasks on your spiritual journey. It will free vast amount of consciousness that previously had been trapped in useless and compulsive thinking. A very effective way of doing this is simply to take the focus of your attention away from thinking and direct it into the body, where being can be felt in the first instance as the invisible energy fluid that give life to what you perceive as the physical body. Connecting with the inner body. Connecting with the inner body. So चलो अब पढ़ते हैं inner body क्या है. Please try it now. You may find it helpful to close your eyes for this practice later on when being in the body has become natural and easy. This will no longer be necessary. Direct your attention into the body. Feel it from within. Is it alive? Is this life in your hands, arm, leg and feet? Is your abdomen, your chest? Can you feel the subtle subtle energy fluid that pervade the entire body and give vibrant life to every organ and every cell? Can you feel it simultaneously in all parts of your body as a single fluid of energy? Keep focusing on the feeling of your inner body for a few moments. Do not start to think about it. Feel it. The more attention you give it, the clearer, the stronger the feeling will become. It will feel as if every cell is becoming more alive. And if you have a strong visual sense, you may get an image of your body becoming luminous. Through such an image can help you temporarily pay more attention to the feeling than to any image that may arise. The image, no matter how beautiful or powerful, is already defined in form, so there is less scope for penetrating more deeply. Wow. कह रहा है कि तुम्हारे अंदर जो एनर्जी है, जो जीवन है, उसे फील करो अपने चेस्ट में, अपने नाक, कान और अपने अंदर जो एक एक सेल है उसमें आंख बंद करके फील करो वो एनर्जी. भाई यही कहता है सेल्फ रियलाइजेशन है ये. तो चलो आगे क्या कहता है राइटर, इसके बारे में पढ़ते हैं हम. SGD, अगर कोई भाई हमें सुपर चैट भेजना चाहता तो लेट्स प्लीज़ सेंड इट. आई हैव नॉट रिसीव्ड अ सिंगल पेनी सेंट येट, और होपफुली कोई ना कोई मुझे भेजेगा ज़रूर. Connecting with the inner body. Awake, connecting with the inner body. Please try it now. You may find it helpful to close your eye for this practice later on. Being the body has become natural and easy. Turn the body, feel it from within, be alive. So हमने पढ़ चुका, आगे पढ़ते हैं. The feeling of your inner body is formless, timeless and unfathomable.
You can always go into it more deeply. If you cannot feel very much at the stage, pay attention to whatever you can feel. Perhaps there is just a slight tingling of your hand or feet. That's good enough for a moment. Just focus on the feeling your body is coming alive. Later, we will practice some more. Please open your eyes now, but keep some attention in your inner energy field of the body. Even as you look around the room, the inner body lie at the threshold between your form identity and your essence identity. Your true nature never lose touch with it. काफ़ी अच्छी किताब है यार ये. वी हैव कंप्लीटेड फ्रॉम 89 to 94. 5 पेज हमने भी कंप्लीट कर चुके हैं. थोड़ा और पढ़ें क्या? थोड़ा और पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिस इज़ मच मोर. तो भाई जहाँ तक मुझे समझ में आया इस किताब के बारे में, इन्होंने कहा है कि हमारे अंदर जो एनर्जी है वो है क्या, मतलब इंसान है क्या, डीप स्टेट माइंड, मतलब इनर बॉडी, आउटर बॉडी, सेल्फ रियलाइजेशन क्या है. तो वो कहते हैं कि आंखें बंद करो और अपने अंदर अपने बॉडी पार्ट को महसूस करो. आपका चेस्ट, ऑर्गन, लेग, और आपके अंदर जो सेल हैं, आंखें बंद करें, उनके अंदर देखो जो एनर्जी फ्लो हो रही है. दैट इज़ व्हाट इज़ लाइफ, और दैट इज़ व्हाट इज़ प्रेजेंस. सो ये सब जो आप एनर्जी, मूवमेंट, फ्लो जो हो रहा है, इसको महसूस करोगे, देन यू विल रियलाइज व्हाट इज़ लाइफ एंड व्हाट इज़ नाउ. सो यही इस वीडियो में राइटर कहना चाहता था. और नेक्स्ट रीडिंग हम करेंगे अगली बार जो हमारा सेशन होगा. ये ऑलमोस्ट आधे घंटे की रीडिंग हो चुकी है, जो कि हमने अभी जस्ट फिनिश करी है. 5 पेज लगे हमें आधे घंटे की रीडिंग करने में भाई. मतलब हाफ एन आवर में 5 पेज. यूजुअली मेरा टारगेट रहता है 5 मिनट में 1 पेज. बट हम थोड़ा स्लो थे बिकॉज आई वॉज इंटरेक्टिंग विद यू गाइज इन बिटवीन. उसी वजह से ये जो है थोड़ा स्लो हुआ. बट किताब पढ़ने में मैंने एक चीज़ नोटिस की. जब मैं किताब पढ़ता हूँ ना, तो जब मैं लाइव जाता हूँ किताब पढ़ते हुए, तो मेरा फुल फोकस, मतलब समझ में नहीं आता किताब में मैं क्या पढ़ रहा हूँ, बस पढ़ते जाता हूँ. लेकिन जब मैं फोकस ओनली किताब पे रखता हूँ, लाइव नहीं जाता हूँ, तो मुझे अच्छे से समझ में आता है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ. सो यही वो राइटर भी कहना चाहता है कि अपना फुल फोकस वहीं पे लगाओ जहाँ पर आपको प्रेजेंस में हो. लेकिन अगर मैं स्विच अभी किताब पढ़ रहा हूँ, स्विच में आपकी तरफ भी ध्यान हो रहा है, तो मेरा फोकस जो है डाइवर्ट हो जाएगा. एक तो मैं किताब पढ़ रहा हूँ, थोड़ा उस पर रहेगा, फिर आपसे रहेगा, फिर बात करूँगा, फिर कमेंट पढ़ूँगा, फिर रिप्लाई दूँगा, तो डिसकनेक्टेड हो जाता है आदमी का फोकस, है ना. बट जो भी है इज़ बेटर. अच्छा लगा हमको इस लाइव में आप लोगों से बात करके. सो जितने भी लोग देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करें आप कहाँ से देख रहे हैं, और आपको ये वीडियो कैसे आई फीड में, मतलब जस्ट स्क्रॉलिंग से आई, नोटिफिकेशन से आई, सर्च से आई, या किससे आई. अभी भाई एक आदमी देख रहा है हमको. तो चलो अभी हम अपना स्टेटस चेक. 30 मिनट का व्यू हमारा, वॉच टाइम हमारा आ चुका है. एक व्यूअर हमारा जो 30 मिनट का व्यू हमारा, वॉच टाइम हमारा आ चुका है. एक व्यूअर हमारा जो कंटिन्यू देख रहा है ये वीडियो. समटाइम वो 2 हो रहे हैं, समटाइम 1 हो रहे हैं. सो गाइस प्लीज़ कमेंट करो आप कहाँ से देख रहे हो. आई नीड टू नो एंड आई वांट टू नो. मेरे लगभग 5800 सब्सक्राइबर हैं, और उनमें से ओनली एक आदमी बंदा देख रहा है. सो विच इज़ वेरी 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 फैसिनेटिंग फॉर मी, एंड आई डोंट नो व्हाई दिस हैपनिंग. कमेंट करो ताकि मैं आप लोगों से बात कर सकूं, कुछ हम एक दूसरे के बारे में जान सकें. और अभी मैं थोड़ी देर में एक वीडियो अपलोड करूंगा, तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को भी सपोर्ट करिएगा. और वो वीडियो होने वाली है बहुत ही इम्पोर्टेंट. उस वीडियो में बताऊंगा कि हिंदुस्तान जो है ना, हमारा हिंदुस्तान है, लेकिन हिंदुस्तान के बाहर भी एक छोटा हिंदुस्तान है. और बहुत सी कंट्री हैं जहाँ पर मिनी इंडिया है, मतलब लिटिल इंडिया है. जैसे कि
मलेशिया में है लिटिल इंडिया नाम की जगह, सिंगापुर में जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पे लिटिल इंडिया है, ब्रिटेन में आप जाओगे लंदन में वहाँ पे भी लिटिल इंडिया है, और बहुत सारी कंट्रीज़ जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, बहुत सारी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में भी आपको लिटिल इंडिया मिल जाएगा। लिटिल इंडिया मतलब एक कम्युनिटी होती है इंडियंस की जो आए होंगे माइग्रेंट और वहाँ पे उन्होंने सेटल हुआ होगा, तो कल्चर हमारा जो कि हमारा खान पान, रहन सहन, बोली भाषा और जो रीति रिवाज, धर्म है, वो सब स्टेब्लिश हो जाता है वहाँ पर एक दूसरे कॉन्टिनेंट में, दूसरी कंट्री में। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो एक्सपेंड होता है और एक पहचान बन जाती है कि हाँ यहाँ पर इंडियन लोगों की कम्युनिटी है, तो इसे लिटिल इंडिया नाम दे दो। सो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है वहाँ के रेट्स के बारे में। मैं एक बनाना ख़रीदा था, बाहर कोई बनाना हमको $3-4 का पड़ता, लेकिन वहीं पे मैं गया, इंडियन या बांग्लादेशी मार्केट थी, तो $1 के मेरे को 3 बनाना मिले, तो विच इज़ वेरी वेरी रेयर इन सिंगापुर, सीरियसली वेरी रेयर। लेट्स मी चेक इट आउट अगेन गाइस। सभी आप लोगों से विदा लेने का टाइम आ चुका है, क्योंकि मुझे करनी है अभी वीडियो एडिटिंग, और चलो मैं लाइव के साथ ही वीडियो एडिट करता हूँ ताकि आप लोगों को मज़ा आए वीडियो एडिटिंग कैसे करता हूँ। अपना सेटअप दिखाता हूँ मैं सबसे पहले। भाई ये मेरा लैपटॉप है, इससे मैंने वीडियो कॉल इंपोर्ट कर रखी थी, शायद 1 घंटे बाद ना 50 मिनट बाद 59 मिनट बाद जो है ना ये लाइव अपने आप ही हट जाएगी। और ये मेरा मैकबुक है, काफ़ी महंगा है, यूट्यूब की वजह से लिया था मैंने, लेकिन नहीं हो पाया अभी तक जो कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। सो 10 मिनट की हमारी वीडियो बन चुकी है, आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। आप देख सकते हैं अब हो क्या रहा है, क्योंकि कल रात को मैंने जो लास्ट क्लिप देखी थी ना, उससे आगे एडिट करता हूँ। सोने की दुकान काफ़ी बड़ी है, आपको वहाँ मिल जाएगा यहाँ पर हर जगह, और क्वालिटी बहुत अच्छी है। 916 यहाँ का हॉलोग्राम है। आई गेस काफ़ी लंबी वीडियो हो जाने वाली है, जो कि डिफाइन करता है कि ये सोना कितना प्योर है। और सामने एक और मंदिर है माता काली का, और ये लाइट अप देख लो ना आप स्ट्रीट्स पर, ये हो गई थी स्टार्ट जब यहाँ पे थी दिवाली, और दिवाली से अभी तक है ये। तो यहाँ से एक बेटर व्यू आ सकता है मंदिर का, बाहर से अंदर है ये बहुत ही शानदार खूबसूरत मंदिर। अगर आपको यहाँ की वीडियो देखी तो पहले वीडियो देख सकते हैं, काफ़ी बार मैंने अंदर जाके यहाँ पर वीडियोस वगैरह बनाई हैं, तो आप देख सकते हैं इसको। तो चलो कंटिन्यू एडिट करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपको ये स्क्रीन दिखाऊं, लेकिन ये रिकॉर्ड नहीं होगी यार अभी। ट्राई करता हूँ मैं आपको दिखाने की, है ना, एक अच्छा सा व्यू ताकि आपको मिल सके। जाओ कहीं मत, अभी मैं शिफ्ट करता हूँ, लेकिन होगा कैसे। ये देखो थोड़ा गंदा है मेरा रूम, बट आप लोगों को दिख जाएगा। ये मैं एडिट कर रहा हूँ, थोड़ा नीचे लेता हूँ मैं इसको, यस, अब आप लोगों को दिख जाएगा कैसे मैं एडिट कर रहा हूँ। थोड़ा इसकी वॉल्यूम बढ़ाएंगे। ये जो मैं वो यूज़ कर रहा हूँ ना, क्या कहते हैं इसे, एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ये भाई फाइनल कट प्रो पेड वर्जन है। ये काफ़ी महंगा पड़ा था मेरे को 4-5 साल पहले। दर्शनम घुसा है अभी, चिल्ली चिकन डोसा नूडल सब कुछ वाइस में। लेट्स क्लिप इन अनदर वीडियो क्लिप, ये जाएगी यहाँ पर, इसकी थोड़ा आवाज़ बढ़ा देंगे हम, क्योंकि शोर बहुत रहता है ना, उसके चक्कर में एडजस्ट करना पड़ता है हमको। सो यहाँ पर है हेयर कट की शॉप, और $8 ओनली, $8 कितना हो गया, 550 के ऊपर। तो बाल कटाना थोड़ा महंगा है, थोड़ा ये बहुत महंगा है। सो ये जो अनवांटेड पार्ट है ना, ये जो उंगली आ रही है बीच में, इसको हम हटा देंगे, और यहाँ से हम कट कर देंगे इसको, बी से कट, ए से रिसेट और डिलीट। सो ये नई क्लिप है, इसको हम क्लिक करेंगे, ये यहाँ पर आगे नई क्लिप, इसको ड्रैग करेंगे और यहाँ पर ले आएंगे, बीच में हम दे देंगे ट्रांजैक्शन, ये आगे डबल क्लिक के क्रिएट ट्रांसलेशन आ गया हमारा, ट्रांजैक्शन सॉरी, महंगा है थोड़ा, भी बहुत महंगा है। इसको भी यहाँ से हम
आउट करेंगे क्योंकि हाथ बीच में आ रहा है। इसको कट कर दिया, इसको इरेज कर दिया और ये क्लिप्स आगे आ गई। भाई एडिटिंग भी एक स्किल है। महंगा है थोड़ा, भी बहुत महंगा है भाई, मार मत देना मेरे को। इसको शायद यहाँ पर मेरा वो काम नहीं कर रहा था क्या, माइक, ये जैसे ये वीडियो तो यहाँ पर है हेयर कट की शॉप। बहुत पीछे चले गई क्या। हाँ यहाँ पर महंगा है थोड़ा, भी बहुत महंगा है भाई, मार मत देना मेरे को। यहाँ पर मेरा माइक बंद था शायद। यहीं पे हम इसे कट कर देंगे क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है ये पूरा पार्ट। इसके बाद हम यहाँ जाएंगे, इसको ऐड करेंगे एंड देन वी ऐड वॉल्यूम बढ़ा देंगे, क्रसर को लेंगे यहाँ और देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी रोड साइड किनारे सेल लगती है जिसका नाम है वेब वैल्यू। सस्ते से सस्ता माल मिलेगा आपको यहाँ पर। और मिलता क्या है यहाँ पर, बैग्स वगैरह, चॉकलेट। यहाँ पर एक तो गाने चल रहे हैं ना, इससे ना डिस्टर्ब हो जाएगा हमारा वीडियो का। देखो सब स्ट्रीट शॉप मिल जाएगा आपको काफ़ी किफ़ायती रेंज पर यहाँ पर सामान। कट कर देंगे इसको, आगे चलेंगे। मिल जाएगा आपको काफ़ी किफ़ायती। यहाँ पर भी एक मनी चेंजर है, मनी जहाँ से आप एक्सचेंज कर सकते हैं। और सामने है मुस्तफ़ा सेंटर। अगर आप सिंगापुर आए ना, यहाँ नहीं आए तो मतलब आप यहाँ नहीं आई हो एक्चुअली में। तो मस्ट विजिटिंग साइड से भाई, अगर आप यहाँ पर आते हो पूरे इंडिया में। और काफ़ी बड़ी हिस्ट्री है इसकी, बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है। ऑलमोस्ट हर चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इसकी मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, अगर आपको देखनी है तो चेक कर सकते हो आप यूट्यूब चैनल पर। बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है भाई, कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं आप। यहाँ भी हाथ आ रहा है, थोड़ा यहाँ से डिलीट कर देते हैं ये देखो, क्योंकि एंड में बोल नहीं रहा ना। एक और है, इसको भी ऐड करो यहाँ पर। इसका थोड़ा आवाज़ बढ़ाएंगे, वह 6, हाँ 6 तक बहुत है वॉल्यूम हमारे। सो ये है मालाबार गोल्ड एंड डायमंड, काफ़ी बड़ा ब्रांड है भाई इंडिया का साइज। अभी सिंगापुर में ऑपरेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। वो मुझसे ऑफ कर रहा हूँ, उसका वॉक एंड ख़त्म ही नहीं हुआ है और ये आगे तक